You have a smooth particle, which is this particle P, and it has a mass of 80 grams. So please make sure कि आप ये unit सही इस्तेमाल कर रहे हैं. The mass is given to you as 80 grams. So जब आप इसको kg में convert करके डालेंगे तो accordingly आपका divided by कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा. So इसको 0.08 kg के तौर पे आप जो है वो डाल सकते हैं. It is attached to an elastic cord extending from point O to point P, and due to the slotted arm guide, and due to this slotted arm guide, this particle P moves along the horizontal circular path. ठीक है, तो आपके पास ये सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर ये पार्टिकल मूव कर रहा है. क्यों मूव कर रहा है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस गाइड रॉड, जो कि रोटेट कर रही है एट अ स्पीड ऑफ 5 रेडियंस पर सेकेंड. इफ दिस cord has a stiffness of 30 Newton per meter. So this cord which is connecting this particle P with the center of rotation O, it is an elastic cord, so it has a stiffness of 30 newtons per meter. So you are going to take it as a spring. आप इसको as a spring के तौर पे consider करेंगे because this cord is elastic cord और उसका आपको K जो है वो known है. The unstretched length of this cord is given to you as 0.25 meters. You need to determine the force which this guide rod is exerting on the particle at the instant when theta is equal to 60 degrees. The guide has a constant angular velocity of 5 radians per second. It means that the angular acceleration is going to be equal to 0 because this rod is rotating with a constant angular velocity. The motion is again occurring in the horizontal plane. So it means that you are not going to include the weight as such in this particular case. Is the problem clear to all of you? Yes, sir. Okay, so moving towards the axes, first of all, in order to draw the axes which are involved here. So I'm going to draw first of all the radial axis, which is the R axis. The direction of this radial axis is going to be radial axis का direction क्या होगा? It is going to be in this particular direction. So let me say that this is my R axis. Accordingly, perpendicular to this radial axis, this is going to be the direction of transverse axis, that is 90 degrees with respect to the radial axis. ये आपके पास transverse axis जो है उसका direction आ जाएगा, which is 90 degrees with respect to the radial axis. ये दोनों axis clear हैं एक को? Yes, sir. Okay, what about the tangential axis in this case? इंस्पेक्शन से क्या नजर आ रहा है? टेंजेंशियल एक्सिस किस तरफ होनी चाहिए? It should be tangent to the curve at this instant. So should it be positive? psi की वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए? तो पॉजिटिव आएगी. तो पॉजिटिव आनी चाहिए. So applying that formula of psi, which is tan inverse r over dr by d theta. R is given to us as 0.8 sine of theta. What is going to be the first derivative of this r? Cos theta. 0.8 cos of theta. So putting the value of theta to be equal to 60 degrees, हमें जो psi की value है that comes out to be 60 degrees here. Since this psi comes out to be a positive value, so हमारे पास ये वाली जो axis है t axis, ये r axis से counter clockwise direction में 60 degrees के ऊपर lie करती हैं. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, so accordingly जब हमारे पास t axis आ गई, उसके accordingly this should be the direction of n axis. So these are the 4 axes which are involved here, r and theta axis as well as n and t axis. Okay, now moving on to the various forces which are being involved in this case. So forces जो involve हैं हम उसके हवाले से जो है वो लिखते हैं. सबसे पहले the force which this slotted guide rod is exerting on the particle, due to which this particle is basically rotating on that circular path. वो force जो है उसको हम FOA का नाम दे देते हैं. What should be the direction of that force? Along positive theta. Along positive theta. So this is basically that force which we are talking about, the force which this slotted guide rod is exerting on this particle. So we have named it as FOA and it would be directed towards the theta axis. Okay, any other force? So दो और forces हैं. एक normal जो reaction force आ रही होगी. Okay, just a minute. Normal reaction force जो आ रही होगी वो क्यों आ रही होगी?
किस सर कनेक्शन दो, को रिमूव? एक तो जो वैसे डिस्क के साथ है वो, ओके, जिसके साथ जो कनेक्शन है उसको जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स आएगी. व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट नॉर्मल फोर्स? सर नेगेटिव एन के अलाउंग. ओके, एन एक्सिस के अलोंग चलें, अभी कह देते हैं उस पे नेगेटिव पॉजिटिव की बात, तो फिर वो बात की कहानी है. सो दिस फोर्स एन सी वुड बी एक्टिंग अलोंग द एन एक्सिस. जो क्यों आई है ये फोर्स हमारे पास? जब हमने इस पार्टिकल और डिस्क के कनेक्शन को रिमूव किया है, तो डिस्क को रिमूव करके हमें डिस्क की वजह, रिमूवल की वजह से ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिली है. अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ गलती क्या करते हैं, वो इस नॉर्मल फोर्स को इस आर एक्सिस के अलोंग बना देते हैं, हालांकि नॉर्मल फोर्स आपको पार्टिकल और डिस्क के कनेक्शन की वजह से मिल रही है. जब डिस्क को आप रिमूव करेंगे तो डिस्क और पार्टिकल का कनेक्शन टी एक्सिस के अलोंग है, तो उसके परपेंडिकुलर एन एक्सिस के अलोंग आपको ये नॉर्मल फोर्स मिलेगी. अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि बाय मिस्टेक दे ड्रॉ दिस नॉर्मल फोर्स टू बी एक्टिंग अलोंग द आर एक्सिस, व्हिच इज रॉन्ग. सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो जो आइसोलेट कर रहे हैं पार्टिकल को, जिस जिस चीज का कनेक्शन रिमूव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको फोर्सेस जो है वो मिलनी चाहिए. इज दिस पॉइंट, दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. Okay, now coming to the other force which is being involved here. जी अब्दुल्ला, कौन सी फोर्स थी? सर इलास्टिक फोर्स जो है. इलास्टिक फोर्स, या हम इसको स्प्रिंग फोर्स कह लें, इलास्टिक कॉर्ड के रिमूवल की वजह से जो आ रही है. सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स? सर अलोंग नेगेटिव आर. Along negative r. Okay, so let me denote it with a yellow color, and this force, which is the spring force, it would be acting in this direction, which is towards the negative r. My question is, why you have drawn this spring force towards the negative r? Positive r की तरफ नहीं हो सकती थी ये? सर वो स्ट्रेच हुआ है ना. टेंशन. जी. The correct answer is कि since the spring is being stretched at this moment, तो जब भी spring stretch होता है, the spring force will try to move that spring to its neutral position. तो वो उस डायरेक्शन में लगेगी जो उसको वापस अपने न्यूट्रल पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहती है. तो वो आपका फिर ये वाला डायरेक्शन बनता है, which is towards the negative r axis. Okay, my next question is, Abdullah, आपके बजाय कोई और आंसर करे, any other volunteer? The question is, how we have judged that the spring is being stretched at this point? सर क्योंकि उसकी ओरिजिनल लेंथ जो दी हुई है वो 0.25 मीटर दी हुई है, और यहाँ पर फ्रॉम सेंटर से रेडियस तक की सर जो डायमेंशन है वो 0.4 मीटर है. That's correct. So definitely ये 0.25 से तो बड़ा ही होगा. It means that the spring is going to be stretched at the instant when theta is equal to 60 degrees. That's why we have drawn the spring force towards the point O, that is towards the negative r axis, rather than towards the positive r axis. Is this point clear to all of you? यस सर. Okay, what about if frictional force is also being involved here? अगर होती तो किस डायरेक्शन में आती friction force? अलोंग नेगेटिव टी. Along negative t axis. Okay, so these are since friction is not involved here because the particle is smooth. So now all the forces are being shown on this free body diagram. Now we need to apply the equations of motion along the r and theta axis in order to determine the forces here. So once we are applying summation Fr equal to MAR, the forces which are acting along the r axis, अगर हम थोड़ा सा एंगल्स के हवाले से बात कर लें, जिस तरह भी हमने कहा t और r के दरमियान हमारे पास साई है, तो हमारे पास ये वाला एंगल t और थीटा के दरमियान इट शुड बी 90 माइनस साई, विच इज 60 डिग्रीज. अकॉर्डिंगली हमारे पास n और नेगेटिव r के दरमियान भी एंगल जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंगली 30 डिग्रीज ही जो है वो आएगा. इट मीन्स दैट वंस आई एम रिजॉल्विंग एफ आर, या फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहा हूँ along the r axis, what are the forces which I should include in this summation FR equation? The horizontal component of NC और जो spring force है. Horizontal component की बजाय इसको R component कहते हैं, ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? Yes sir. So वो कौन सा component है? NC cos sin, NC cos of 30 with a positive sign, since once you resolve this NC along the R and theta axis, the R component is going to be positive, but the theta component is going to be negative. So NC cos 30 एक component आ गया जो कि R axis के along act करे. Any other force which is acting along the R axis? Spring force here.
So spring force है, and since this spring force is acting towards the negative r axis, so we should include it with a negative sign. It should be equal to MAR. Let us say that this is our equation number 1. Summation FR equal to MAR. NC cos 30 minus F spring should be equal to MAR. Is this equation clear to all of you? Yes, sir. Okay, now applying the equation along the theta axis, summation F theta equal to MA theta. What are the forces which are acting along theta axis here? FOA or NC sin theta, sin 30. The force which this guide rod is exerting on this particle FOA, and the sine component of NC. So NC sine of 30 with a negative sign should be equal to MA theta. So let us say this is my equation number 2. From kinematics, we can easily determine the value of AR and A theta. So once we have applied those kinematics, we are going to get the values of AR and A theta. Still in these two equations, 1 and 2, we have how many unknowns? NC, FOA, and F spring, 3 unknowns, 2 equations. So can we evaluate the spring force? Yes, sir. What is this spring force? F spring is K L minus L naught, isn't it? Yes, sir. Where L is the length of the spring at the instant जिस पे आप analysis कर रहे हैं, L naught is the unstretched or neutral length of that spring. This neutral length is given to you as 0.25 meter. What about this length L? What should be the value of this length L? 0.8 sin 60. 0.8 sin 60. ये कैसे आपने बताया है? सर उसके जो R का डिस्टेंस है पॉइंट O से P तक. That's correct. At the instant when theta is equal to 60 degrees, this is going to be the length L जिसकी हम जो है वो बात कर रहे हैं. So this is going to be the length L, which is basically equal to the R coordinate या radial coordinate, which is 0.8 sin theta, और theta आपके पास चूंकि 60 है, so this L would become 0.8 sin of 60. यहाँ से आपको spring force मिल जाएगी. Then your system reduces to 2 equations and 2 unknowns. Once you solve this system simultaneously, you are going to get the values of those 2 unknown. So is the solution clear to all of you? मूव करते हैं हम जो एक्चुअल सोल्यूशन है उसकी तरफ. दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम जिसका अभी हमने जिक्र किया था कि ये वो फोर्सेस हैं जो इन्वॉल्व होंगी. वन इज दिस फोर्स OA which would be acting towards the theta axis, NC would be acting towards the N axis, spring force would be acting towards the negative R axis. So applying the equation of motion, summation FR equal to MAR, summation F theta equal to MA theta. Using kinematics, R at theta equal to 60 degrees would be 0.6928. R dot would be equal to 2 meters per second. Again, kindly भूल ना जाइएगा theta dot apply करना. We are applying the chain rule since R is given to us as a function of theta. Similarly, R double dot is going to be minus 17.321. Accordingly, हमें AR और A theta की value मिल जाएगी, which we are going to put in equation 1 and 2 towards the right hand side of both these equations. Then we have discussed about the spring force. The spring force is basically A. क्या चीज? L का, लेकिन L की वैल्यू किस तरह थी? जी मैं वो दोबारा बताता हूँ. ये स्प्रिंग फोर्स के ऊपर जब हम आए, तो स्प्रिंग फोर्स हमारे पास होती है kx के बराबर, वेयर x इज द स्ट्रेच इन द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स न्यूट्रल पोजीशन. इसको हम L माइनस L नॉट के तौर पे लिखते हैं. अब यहाँ L नॉट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि दिस कॉर्ड हैज अ अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 0.25. जहां तक ताल्लुक L का है, तो L रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग या लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड एट द इंस्टेंट कंसीडर. अब जो इंस्टेंट हमने कंसीडर की है उस पे इस कॉर्ड की लेंथ जो है वो यहाँ से लेके O से लेके P तक है. ऐसे ही है? O से लेकर है? जी ये O ही हमारा सेंटर पॉइंट है ना जिसपे कॉर्ड कनेक्ट हुआ हुआ है. के जहाँ से तो वो O से लेके होता है वहां से. तो O से लेके P तक जो लेंथ है 60 डिग्री थीटा के ऊपर, ये लेंथ L रिप्रेजेंट करती है. यही हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट R भी तो यही चीज है ना, जो O से लेके इस सेंटर यानी इस पार्टिकल तक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो बेसिकली R एंड L आर सेम थिंग. सो R इज गिवन टू अस एट द इंस्टेंट 0.8 साइन ऑफ थीटा, एंड थीटा इज 60 डिग्री. सो पुटिंग 60 degrees theta, this R would be equal to L, which is 0.8 sine of 60. Clear है ये चीज? ठीक है. सो आपने L की जगह ये R की वैल्यू पुट कर दी, which is 0.6928. That will give you the spring force to be equal to 13.284 Newton. Now, once this spring force is known to us, the system reduced to 2 equations and 2 unknown. One unknown is NC, the other unknown is FOA. So once you solve these 2 equations, the values of these 2 unknowns comes out to be 7.67 Newton and 12.1 Newton. Is this thing clear to all of you? Any question, any query which you want to ask regarding problem 13-105? Okay. चलिए, अगर मैं आपसे कहता कि आपने ये सारी एनालिसिस थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज पे करनी है, लेट अस सपोज, तो उस केस में क्या चेंज आनी थी?
किसी फोर्स के डायरेक्शन में चेंज आती? सर 30 की वैल्यू का उनकी साइन किसकी वैल्यू? साइन 30 की? साइन 30 is 0.5 and 0.8 sin 30 is 0.4. So again, the spring would be stretched or compressed? तो उसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ तो वही है 0.25. इसका वही है ना सर, स्ट्रेस दिए। फिर stretched ही है. Okay, what about if this angle is 10 degrees? This 0.8 sine of 10 would be equal to 0.139. In that case, the spring would be compressed. So accordingly, the direction of spring force is going to be towards the positive r axis. ठीक है? तो काइंडली इस बात का ख्याल रखें कि इंस्टेंट चेंज करने के हिसाब से भी आपकी फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है. एंड यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम अकॉर्डिंगली. स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो अननोन फोर्स नहीं होती, वो आपको नोन होती है. तो काइंडली इसको आप अपने सही डायरेक्शन में जो है वो ड्रॉ करेंगे. Okay, any other question which you want to ask regarding this exercise problem? Otherwise, we are going to move towards the final problem of this topic, which is relevant to vertical plane. अभी तक हमने जितनी कहानी की है वो सारी के सारी horizontal plane में थी, but now we are going to solve a problem of vertical plane as well, and we are going to examine कि मजीद complicated हो जाता है अगर आपके पास vertical का problem कोई आ जाए. So कोई इस 13-105 में तो कोई issue नहीं है किसी को? No, sir. Okay, so moving on to the final problem of this topic, which is problem 13-108. The figure is very much similar to the figure जो कि अभी हमने 13-105 में की है, सिवाय इसके कि जो कॉर्ड आपकी है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है. अब आपको एक स्प्रिंग नजर आ रहा है उस कॉर्ड की जगह, और वो उसका डायरेक्शन जो है वो rather than from center to the particle है, वो particle से लेके end of that rod तक आ गया है. So you have a 1.5 kg cylinder C which travels along the path described by the function r equal to 0.6 sine of theta. So this r is defined to you as a function of theta to be equal to 0.6 sine of theta. If this arm is rotating counterclockwise with a constant angular velocity of 3 radians per second. So this arm OA is rotating with a constant angular velocity of 3 radians per second. It means that the angular acceleration is going to be 0. You need to determine the force exerted by the smooth slot. Again, the slot is smooth, so friction किसी भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं थी. So determine the force exerted by the smooth slot on the arm, smooth slot in the arm on the cylinder at the instant when theta is equal to 60 degrees. The spring has a stiffness of 100 newtons per meter and its unstretched length is given to you. That is, when theta is equal to 30 degrees, the spring is unstretched. अब बजाय इसके कि स्प्रिंग की अनस्ट्रेच्ड लेंथ आपको गिवन होती, आपको ये कहा गया है कि जब ये रॉड जो है वो 30 डिग्रीज पे होता है तो उस वक्त ये स्प्रिंग जो है वो अपनी अनस्ट्रेच्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है, तो थोड़ा सा सवाल चेंज कर दिया गया है, क्वेश्चन को मजीद थोड़ा सा घुमा दिया गया है. तो कोशिश करें कि हम इसको इसी तरह समझें, ये ना हो कि कंफ्यूज हो जाएं. The cylinder is in contact with only one edge of the slotted arm. Neglect the size of the cylinder, but the problem is that motion is now occurring in the vertical plane rather than the horizontal plane. So this whole motion is occurring in the vertical plane. It means that once you are isolating this particle, then the weight of the particle should also be included in your analysis. Is this point clear to all of you? Yes, sir. चलिए, अब थोड़ा सा मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, गौर से इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को एक दो दफा पढ़ें, उसके बाद फिर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे. लेकिन अभी फिलहाल खामोशी से एक या दो दफा इन 3-4 लाइनों को दोबारा पढ़ें, उसके बाद वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. और अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये प्रॉब्लम अगर आपके समझ आ जाता है तो आप आर थीटा कोऑर्डिनेट से रेलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा. Okay, I hope that the statement has been read by all of you once or twice.
So moving on to the free body diagram of this particle. Now before moving on to the free body diagram, let us first of all represents the r and theta axis. Since we are going to perform the analysis at the instant when theta is equal to 60 degrees, so let us assume कि आपको ये जो फिगर दिखाई गई है ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द आर एक्सिस इज गोइंग टू बी ड्रॉन विच इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर एक्सिस जिस पे आपका पार्टिकल इस इंस्टेंट पे लोकेटेड है. सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ from the fixed origin O towards that particle आपकी r axis define हो गई है and accordingly इस r axis के 90 degrees के ऊपर आपने अपनी theta axis जो है वो define कर लिया. So these are the r and theta axis which are going to be defined here. So what should be the direction of tangential axis? It should be tangent to the curve. ऐसे ही है. Yes, sir. So tangent to the curve जो हमारी एक्सिस यहाँ बन रही है वो तकरीबन ये वाली एक्सिस बन रही है. So let me denote it as tangential axis t axis. So as per that figure जो कि अभी हम देख रहे हैं tangential axis r axis के किस साइड पे लाई करती हैं? Counterclockwise. Counterclockwise. So that angle psi should be positive or negative from that formula? Positive. Positive. So psi should be equal to tan inverse r which is 0.6 sine theta divided by dr by d theta. Derivative r कर लें तो क्या आता है? 0.6 of theta. 0.6 cos of theta. Putting the value of theta to be equal to 60 degrees, this psi would comes out to be tan inverse tan 60. Tan inverse कट गए, so psi would comes out to be 60 degrees. Since this psi comes out to be positive quantity, it means कि हमारे पास ये जो t axis का डायरेक्शन है ये सही आया है. अकॉर्डिंगली ये t axis r axis से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतने एंगल के ऊपर जो है वो लाई करती हैं. एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास जो n एक्सिस आई हैं वो t एक्सिस के 90 डिग्रीज पे लाई करती हैं टुवर्ड्स द सेंटर. सो हमने ये n एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर ली. ये चारों एक्सिस क्लियर है हर एक को या किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी ऑफ दीज एक्सिस? Yes. Okay, now moving to the forces which are being involved in this problem. As per our previous practice, this guided rod would be pushing the particle because of the rotation of this rod. This particle is going to be pushed by this rod. What should be the direction of the force which this guided rod is exerting on the particle? It should be along the Theta. axis theta. ऐसे ही FOA को हमने इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया because it is the force which this guided rod or slotted rod is exerting on the particle and its direction is going to be perpendicular to the contact surface between the particle and the guided rod. So perpendicular axis जो कि आपकी theta axis आ रही थी, so this FOA would be acting towards the theta axis. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, what about NC? जब आप पार्टिकल और सर्कुलर डिस्क का कनेक्शन रिमूव करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट अ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय रिमूवल ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क. व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दैट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स? Long n. along n एक्सिस. तो हमने उस NC को ड्रॉ कर लिया. अब अगेन जैसा मैंने पिछली उसमें कहा था, अक्सर उसमें गलती करके NC को जो है वो O वाली एक्सिस यानी R एक्सिस की तरफ जो है वो ले लेते हैं. नहीं, NC जो है वो आपको क्यों मिल रहा है? बिकॉज इट इज अ रिएक्शन फोर्स. वंस यू रिमूव दिस डिस्क, तो डिस्क और पार्टिकल का कनेक्शन जो है वो T एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलेगी विच इज दिस NC along the n axis. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, now the third force, which is an additional force being involved here, is the weight of the particle because the motion is occurring in the vertical plane. So what should be the direction of this weight? The mass will be downward moving. Weight would be acting vertically downwards. So हमने इस weight को vertically downward जो है वो represent कर लिया. Any other force which you think जो हम miss कर गए हों? Spring की वजह से force. Spring force, okay. One thing is clear that spring force is going to be along the r axis. What should be the correct direction of that spring force? Positive r or negative r? ये थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा सोच लें, फिर मैं आपसे पूछता हूँ. पहले थोड़ा सा अपना जहन एक्सप्लोर कर लें इस हवाले से. जी, एनीवन वॉलंटियर?
मुझे 2-3 ही आवाजें आ रही हैं, इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं या खामोशी से सो रहे नेगेटिव हैं? ओके, नेगेटिव आर, हाउ यू हैव जज्ड इट? सर जो 30 पे उसकी अनस्ट्रेच्ड है और 60 के ऊपर, अभी 30 के ऊपर आर की वैल्यू अगर देखता हूँ 0.6 साइन 30, उसकी वैल्यू कंपेयर की है 0.6 साइन 60 से, 0.6 साइन 60 जो है वो ग्रेटर है, ठीक है, तो ज्यादा आउटपुट गया हुआ है, यानी कि स्प्रिंग प्रेस हो चुका है। यानी स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है। ओके, इसको अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम स्प्रिंग फोर्स को करेंगे। बहरहाल इसको हमने ड्रॉ कर लिया टुवर्ड्स द नेगेटिव आर एक्सिस। तो ये मेरे पास येलो से जो मैं शो कर रहा हूँ, ये मेरे पास स्प्रिंग फोर्स आ गई है जो कि आर एक्सिस के लॉन्ग ही आएगी, बट टुवर्ड्स द नेगेटिव आर एक्सिस। क्यों टुवर्ड्स द नेगेटिव आर एक्सिस आई है? ऑल्दो अभी आप में से एक ने बताया भी है, लेकिन हम इसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे जब हम इस स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे again. So these are the forces which are being involved here. The first one is NC, the second one is FOA, the third one is weight, and the fourth one is spring force. Okay, now based on our discussion, we are now going to apply the equation of motion along the R and theta axis. But before applying the equation of motion, इसी फिगर पे या फ्री बॉडी डायग्राम पे अगर हम एंगल्स शो कर लें, व्हाट इज द एंगल बिटवीन NC एंड R एक्सिस? ये एंगल कितना होगा हमारे पास? The angle between T and R is 60 degrees. So between T and theta, it is going to be 30 degrees. Accordingly, between N and R, it is also going to be 30 degrees. तो ये एंगल मेरे पास NC का R एक्सिस से जो एंगल आई है 30 डिग्रीज आ गई है। क्लियर है ये चीज? एंगल्स तो क्लियर हो जाएंगे ना? यस सर। Okay, what about weight? What is the angle which this weight is making with respect to the R axis? विद रिस्पेक्ट टू आर जो है 90 माइनस थीटा। Are you sure? सर विद नेगेटिव वो साइड वाला जो उसके साथ। जी बिल्कुल, weight जो R axis से एंगल बना रहे हैं। तो पॉजिटिव आर के साथ बना रहा है वो हो जाएगा सर 30 डिग्रीज। यस सर 60 90 माइनस। कैसे होगा ये थोड़ा सा इधर देख लें। ये थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री जिस पे आप अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपकी आर एक्सिस है, डब्ल्यू इज बेसिकली एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो अगर मैं इस इंस्टेंट को कंसीडर करूं ये थीटा है, तो द रिमेनिंग एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा व्हिच इज 30 डिग्रीज हियर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Okay, now we are going to apply the equation of motion. पहले हम equation of motion apply करते हैं, फिर हम spring force की बात करेंगे। So applying the equation of motion, summation FR equal to MAR. ये वो free body diagram है जो कि अभी हमने पिछले उस पे बनाई थी। The forces which are acting along R axis is the spring force acting towards the negative R axis. So minus F16 आ गया। The component of weight which is acting along the R axis, weight को अगर मैं resolve करूं तो इसके दो components बनेंगे जो कि ये दो कंपोनेंट्स हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव आर। सो माइनस डब्ल्यू कॉस 30 और एनसी कॉस ऑफ 30। एनसी के कंपोनेंट्स बनाऊं तो ये मेरे पास एनसी के जो है वो दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एनसी का कंपोनेंट आर के अलोंग पॉजिटिव बन रहा है, डब्ल्यू का कंपोनेंट आर के अलोंग नेगेटिव बन रहा है। इसी तरह समेशन एफ थीटा इक्वल टू एम ए थीटा, जो थीटा डायरेक्शन में फोर्सेस है, वन इज दिस फोर्स एफ ओ ए व्हिच इज द फोर्स ऑफ दिस आर्म। वेट का कंपोनेंट जो कि नेगेटिव थीटा बन रहा है, सो माइनस डब्ल्यू साइन 30। एनसी का कंपोनेंट जो कि नेगेटिव थीटा के अलोंग बन रहा है, सो माइनस एनसी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए थीटा। काइनेमेटिक्स क्या कहती है कि आर और थीटा, आर डॉट आर डबल डॉट हम फाइंड कर लेंगे। मैं अब इसको रिपीट नहीं कर रहा, ये काइनेमेटिक्स हम बहुत पढ़ चुके हैं, आप ये आराम से कर लेंगे। आपको ए आर और ए थीटा की वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी। So putting those values of AR and A theta here would reduce the system to 3 unknowns and 2 equations. अब इसमें सबसे पहले हम स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं, और फिर जिस तरह आपने कहा था स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन। द स्प्रिंग फोर्स इज बेसिकली KX और KL minus L naught, where L naught is the unstretched length of the spring and L is the length of the spring at the instant जिसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं। Okay, how we are going to find out these L and L naught, because in this case हमें unstretched length spring की नहीं given. So अगर मैं क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ूं, थोड़ा सा गौर से पढ़ें यहाँ से। The spring has a stiffness of 100 Newton per meter and it is unstretched when theta is equal to 30 degrees. 30 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस इंस्टेंट पे द स्प्रिंग इज बेसिकली अनस्ट्रेच। अब यहां से लेके थीटा 30 से थीटा 60 तक जब ये रॉड मूव हुआ है, तो जितना आर में चेंज आया है उतनी ही स्प्रिंग की लेंथ में जो है वो चेंज आ रहा होगा, बिकॉज आर और स्प्रिंग एक ही एक्सिस के ऊपर लगे हुए हैं। तो इन अदर वर्ड्स आर के अंदर जितना चेंज आ रहा है वो बेसिकली स्प्रिंग की लेंथ में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो हम करेंगे क्या कि यहाँ हम
L माइनस एल नॉट की जगह वो जो R हमें गिवन है 0.6 साइन ऑफ थीटा, वो हम देख लेंगे कि 60 डिग्रीज के ऊपर इसकी क्या वैल्यूज थी और 30 डिग्रीज के ऊपर इसकी क्या वैल्यूज थी. दैट विल बेसिकली गिव यू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विच हैज अकर्ड फ्रॉम 30 टू 60, या L माइनस एल नॉट की वैल्यू आपको जो है वो दे देगा. सो आपने किया क्या कि L की या R की वैल्यू निकाली है 60 डिग्रीज, R की वैल्यू निकाली आपने 30 डिग्रीज के ऊपर और दोनों को माइनस कर दिया. इट विल गिव यू दिस वैल्यू x, उसको k के साथ मल्टीप्लाई किया तो देन यू विल गेट द स्प्रिंग फोर्स टू बी इक्वल टू 21.96 न्यूटन. अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमने कैसे जज किया, आप देख लें 0.6 साइन 60 क्या होता है और 0.6 साइन 30 क्या होता है. उसके अकॉर्डिंगली आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्प्रिंग अब जो है वो स्ट्रेच हो रहा है या स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो रहा है. तो उसकी बेसिस पे चूंकि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो रहा था तो अकॉर्डिंगली जो है वो हमने स्प्रिंग फोर्स जो है वो टुवर्ड्स दैट पोजीशन जो है वो शो कर दी है. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay, so once we know the spring force value, उसके बाद the system is reduced to two equations and two unknowns. Once you solve it, you are going to get the values of NC and FOA. So this was all. इसमें कोशिश करें कि इस एग्जाम्पल इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा घर पे जाके एक दफा दोबारा सॉल्व करें. मे बी एंगल की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करके देखें क्या फर्क पड़ रहा है. लेकिन आई गारंटी यू कि अगर आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इससे ज्यादा मजीद कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं दिया जा सकता in this equation of motion in the r theta coordinate system. तो अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो probably आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा और गलती के चांसेस आपके ऑलमोस्ट मिनिमम रह जाएंगे. Is it clear to all of you? Our topic or our chapter number 13 is now complete, which is the kinetics of a particle, force and acceleration method. Inshallah in the next आज तो हम स्टार्ट नहीं करते क्योंकि आज अभी स्टार्ट करेंगे भी तो हम इतना कवर नहीं कर सकेंगे. तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर we are going to start chapter number 14 and again probably within 2 weeks हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे because it is a very relatively simple chapter. वर्क एनर्जी से आप फेमिलियर हैं, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से फेमिलियर हैं, तो ये तमाम चीजें हमने डिस्कस करनी है. सो प्रोबब्ली 1.5 और 2 वीक्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपका ये जो काइनेटिक्स का प्रिंसिपल है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसको थोड़ा सा कर लें. और फिर इंपल्स एंड मोमेंटम जो कि निस्बतन एक नई चीज होगी आपके लिए चैप्टर 15, उसमें में भी हम थोड़ा सा शायद टाइम ज्यादा लगा लें. देन वी विल मूव ऑन टू द डायनामिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी. So with this we are going to stop at this point.